Assalamualaikum मेरे प्यारे प्यारे students. Welcome back to Hira Teaches. Today we are going to start a series of lectures on the basics of science. ये वीडियोस उन सब लोगों को फ़ायदा देंगी जो कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, जो हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. ये वीडियोस उन सब लोगों के लिए भी हैं जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो क्यूरियस हैं और वो जानना चाहते हैं. हम शुरू करेंगे अपनी ये सीरीज़ विद द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी. So, the first question which came in our minds about biology is, what exactly is biology and how it works? Well, biology is the scientific study of life. Biology जिंदगी की स्टडी है. ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम हर एक जिंदा जानदार चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और इनके दरमियान में जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ आती हैं उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं. हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब जानदार जिंदा कैसे हैं, हाउ दे मूव, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट, एंड व्हाई देयर इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी. So let's embark on this exciting journey. Biology is the study of life and it's divided into several core concepts. These concepts are cells, genetics, evolution, ecology, and physiology. So let's break down the core concepts of biology. Cells are considered the basic unit of life. Cells are like tiny building blocks that make up all the living organisms, whether it's a sunflower or a cow. जैसे bricks से हम घर बनाते हैं, buildings बनाते हैं, schools और universities बनाते हैं और सब एक दूसरे से different होती हैं, लेकिन उनका basic building block brick ही होता है. वैसे ही तमाम जानदार को बनाने के लिए जो basic brick इस्तेमाल हुई है वो cell है. So cells are the building blocks of life. बट वट आर दे एग्जैक्टली? सेल्स बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें नॉर्मल आई से नज़र नहीं आ रहे होते. दे आर सेल्फ सफिशिएंट बॉडीज दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूस एनर्जी एंड ट्रांसफर मटीरियल्स. Cells combine to form tissues, tissues combines to form organs, and organs combines to form organ systems. Cells also have tiny structures inside them, जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि सेल्स को फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. इट्स लाइक अ होल सिटी इनसाइड अ टाइनी सेल, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हेन ही ऑब्जर्व कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप. कॉर्क दरख्त के ऊपर की छाल होती है, उसको जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको टाइनी कंपार्टमेंट्स नजर आए एंड ही नेम देम सेल्स. और इस तरह हमें लाइफ के इस बेसिक यूनिट के बारे में पता चला. इन बायोलॉजी वी एक्सप्लोर हाउ सेल्स इंटरेक्ट एंड वर्क विद ईच अदर एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस विद ग्रेट एक्यूरेसी. The second core concept in biology is genes and DNA. Genes are the reasons you inherit traits from your parents and even from your grandparents. किसी का फेस कट अपने अब्बू के ऊपर गया होता है तो किसी का गुस्सा, किसी की आंखें अपनी नानी अम्मा जैसी होती हैं तो किसी का फेस अपनी अम्मी जैसा होता है. ये सब कुछ जीन्स और डीएनए की वजह से हो रहा होता है. जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होती हैं और इनमें आपकी सारी फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स की इंफॉर्मेशन होती हैं. It's like a manual of all the instructions for building and operating living organisms. आपकी हाइट, आपका आई कलर, इंटेलिजेंस, हैबिट्स, स्ट्रक्चर्स, सब कुछ इनमें लिखा हुआ होता है. जीन्स सेगमेंट्स होती हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बोलते हैं. ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक कोड कंटेन किया होता है. बायोलॉजी में हम जेनेटिक्स को एक्सप्लोर करते हैं. Here we study inheritance, genetic diversity and the role of genes in health and diseases.
जीन्स को फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में ग्रिगोर मेंडल ने मटर के प्लांट में डिस्कवर किया था और वहाँ से उन्होंने हेरिडिटरी की बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया, जिसको हम आज के दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं और अपनी मर्जी के ट्रेट्स वाले प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल की बेस पे हम जीन्स को इंसर्ट, डिलीट और ऑल्टर कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में, लाइक बीटी कॉटन, राइस, कॉर्न एंड सोयाबीन वेराइटी। Biology wouldn't be complete without the concepts of evolution. Evolution over the generation जिंदगी के बदलने का नाम है. From tiny bacteria to giant whales, evolution has shaped every living thing. ये आइडिया चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है how species change over time through a process of natural selection. Natural selection is like nature's quality control. Basically, this concept explains the survival of fittest. जिन ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट इन्वायरमेंट्स के साथ मैच हुए वो सर्वाइव कर गए और उन्होंने अपने वो ट्रेट्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर लिए और उनकी एक पूरी पॉपुलेशन बन गई, और जिनके पास वो ट्रेट्स नहीं थे वो सर्वाइव नहीं कर सके और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। Biology let us explore the evidence for evolution and understand how life on Earth has evolved from simpler forms to the complex diversity we see today. Biology एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है. It's about interaction with each other and with the environment. Ecology explores how living things fit into the ecosystem and how they depend on each other. It's like biology's way of studying the world's neighborhoods. It's about how living things interact with each other and their environment. Biologists explore topics like ecosystems, food webs, and the delicate balance of nature. वो देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कौन से एनिमल्स कार्निवोर्स हैं जो कि दूसरी स्पीशीज़ को खा रहे होते हैं और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे रह रहे हैं, ये पूरा सिस्टम पीसफुली कैसे चलता है, और अगर कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो कैसे पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म हो सकता है। Rachel Carson and Aldo Leopold laid the foundation of modern ecology in the mid-20th century. The fifth concept in biology is physiology. It's all about how living organisms function, whether it's the human body, a plant's photosynthesis, or an animal's digestive system. Physiology uncovers the inner workings of life. आपने कभी सोचा है आपका दिल कैसे धड़क रहा है, या फिर प्लांट सनलाइट से एनर्जी कैसे बना रहे हैं, या सिंपली हम इंसान चल कैसे रहे हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें फिजियोलॉजी से मिलता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के इनर वर्किंग्स को एग्जामिन करती है। विलियम हार्वेस डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द 17th century and Claude Bernard's work on homeostasis were pivoted in this field. There are uncountable organisms on Earth, so it is almost impossible to study them without categorizing. इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। Biologists love to categorize living things. Taxonomy is the science of classifying and naming organisms. It helps us make sense of the incredible variety of life forms on our planet. It helps us categorize and name the vast diversity of life forms. From bacteria to birds and fungi to fish, taxonomy allows us to organize the living world systematically. Now, you might be wondering, why should I care about biology? Well, biology is everything in your daily life. Biology explain करती है how your body works, how disease spreads, why some foods are nutritious and some other are not. It helps us understand the natural world, protect ecosystems, and conserve endangered species. That's why biology matters. If you are considering a future in biology, the opportunities are vast. You could become a doctor, a nurse, a biologist, a marine scientist, a biotechnologist, biochemist, or even a forensic scientist. Biology opens doors to exciting careers that make a real impact on the world. In a nutshell, biology is the incredible science of life. It's about understanding the wonders of living world and the critical role it plays in our existence. Whether you are exploring it in school or contemplating a career in the field, biology offers endless discoveries and opportunities for those who are curious and passionate about life itself.
आज के लिए बस इतना ही. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Hira Teach for more engaging lessons. Thank you for joining me, and until next time, keep exploring the amazing world of biology.